Good evening, everybody. Am I audible and visible? क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? Give me a quick Yes, thumbs ma'am. up. Yes, you are. Thank you so much. Okay, so what have we gathered here for? Anybody? First journey. What is the webinar all about? Can we have the cameras on? Hina ma'am, Tanisha ma'am. Weight management. Weight management. Weight management. management. Anything else? Healthy Weight diet. management. Healthy diet. Healthy diet. Okay. Anything else? Weight management, disease control, and without any Okay. medicines, basically. Without any medicine. Okay. And with तो kumbhak, क्या? Freedom of medicine. with kumbhak. Okay. श्लेष्म शुद्धि. शुद्धि यानी कि क्लेंस. ओके. तो हम कुंभक से खुद के शरीर को क्लेंस करेंगे. So why is the extra weight or extra pounds or extra kilos there in your body? Because the body is at some risk. जब बॉडी रिस्क में होता है तो वो आपके बॉडी में फैट बढ़ाता है, यानी कि एडिपोज टिश्यूज, राइट. बट हम समझते हैं हमारा वेट बढ़ा हुआ है, but the body is trying to protect you from some or the other risk. Okay, so the body is always guarding us. Are we aware about that? कुछ बीमारी होता है उसके बारे में बॉडी हमें सिग्नल देती है. इसी तरह से बॉडी वेट बढ़ाती है क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्क है आपको. ओके, सो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि वेट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. और सबसे बढ़िया बात क्या है आपको मालूम है? There is absolutely no diet in this. So how many of us have a big smile on our face because we don't have to diet? कितने लोग इस बात से खुश हैं? Oh wow, Rajashri ma'am, very happy that आम खाने को मिलेगा. और डाइटिशियन के पास जाते पहले ही बोलते हैं आम नहीं खाना है. Yes or no? Please write in the chat box. कितने लोगों को आम मना हो जाती है? कितने लोगों को फ्राइड चीजें मना हो जाती है? फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर नहीं खाना है. बट हम लोग यहाँ पर आपको कोई चीज मना नहीं करते, सिर्फ हम आपको तरीके बताएंगे हाउ टू मैनेज योर वेट through your own breath and the way you should eat. Only that. Nothing as in आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है. कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है. क्योंकि कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि जब आप डाइट करते हैं so long term you are actually harming your body. Yes or no? How many people would agree with me? होता क्या है आप देखेंगे जब आप डाइट करते हैं, पहला चीज आपके फेस में एक ग्लो चली जाती है. ओके, जो नॉर्मल ग्लो होना चाहिए एक ह्यूमन. Ma'am, dono Hindi, ma'am. Pardon me? Ma'am, we don't understand Hindi. So see, it is going to be a combination of English and Hindi. Okay, ma'am. Because Okay. many people don't understand English, many people don't understand Hindi. So I'll Okay. alternate. So Okay, thank what you. happens when you diet? You slowly are taking the body away from the nutrition required. तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको होने लगता है. तो जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है तो धीरे धीरे आपके शरीर में वीकनेस होती है. So long term, if you are dieting, it does more harm than doing any good to you.
Maybe short term you'll lose weight, you'll be able to fit into nice clothes, but that is not the aim. The aim is the long term weight management, which is possible only and only by Kumbhak, by working on your own internal self. आपके मेटाबॉलिज्म को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? Not through diet, but through breath hold. So how many of us want to know more about how to manage weight with Kumbhak? Give me a quick answer in the chat box. कितने लोग जानना चाहते हैं कि कुंभक के द्वारा how will you reduce your weight, manage your weight? How many of us are interested to know? Quick. I'm not getting any answers. So should I assume nobody is interested to know how to manage their weight? हम लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जानना है how to manage weight. So give me a quick Sure. answer, yes or no? Yes. Yes. Okay, just one yes, Yes. among 150 participants. Excellent. Yes. Yes. Yes, 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 ma'am. yes. Okay, thank you so much. So just give me Yes. 5 minutes of your screen time. Yes. I will be sharing what Ameda is मैम all कुंभक about. क्या होता है? कुंभक होता क्या है? Yes, you'll get to know all that. Ashwini, can we just have everybody on mute, please? Okay, ma'am. Doing it. Is my screen visible, Ashwini? Yes, ma'am. It's visible. Can everybody see? Okay. Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. The healthy way to manage your weight. Freedom from restrictive diet. आपको कोई डाइट हम नहीं बताते हैं. We just teach you how to work on your breath and come out of your excess weight. So let's go further. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. So let's see what exactly are we going to do. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. So let's come to the fact that who is this webinar for? Strange question, right? But it is for people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution, for people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. So weight management with Kumbhak the right way. Freedom from restrictive diet plans. So what you learn in today's webinar, what is fat? Why the body creates fat? A new way to look at weight management. What is Kumbhak? जैसा कि किसी ने पूछा मुझसे. Why a need for Kumbhak? Why do we need to work on our breath? How Kumbhak works on the body? So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about weight. Thank you so much for listening to me patiently.
So everybody, please take your virtual seats, switch on your camera, और जो भी कुछ आपके engagements है, वो next 1 hour, 1.5 hours के लिए keep it aside. Let there be no pets around or children, so that you can listen to what Swami Raj Vibhuji is saying in his recorded video about weight management and what are the other perspectives that we are looking into. For example, rehabilitation, working on the adipose tissue. तो बहुत बड़ा पार्ट श्लेष्म शुद्धि का है rehabilitation. For example, if you've had a surgery, after that, especially for ladies, once they have to take their uterus out or their other reproductive organs, they start putting on weight. तो उस weight से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? So that is called the rehabilitation, or how do you come out of your weight problems immediately after a surgery. So let's see what Swami Raj Vibhuji has to say. So I'll just tell you how we are going to proceed in the webinar. You will be listening to the recorded video. After that, we will be having somebody live who has been part of the Ameda program. After that, we will be sharing the program details, and I will be taking up the questions immediately after the program details. तो कुछ बिना सोचे लिख डालिए आपके प्रॉब्लम्स जो आपको हो रहे हैं for weight issues. Thank you so much. Namaste. Over to Ashwini to share the video. Okay, ma'am, give me a few seconds. So we can stop the recording. Weight loss. पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्मा शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा. उपमा बनाया होगा ना आपने? तो ऐसा कीजिए कि एक कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने. क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं. और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश. हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला. टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है. सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं. जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है. ये पार्ट ही मिस कर गए. और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा. तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, 2 points that we are missing is pressure and temperature. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं. आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्मा. लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा?
इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 years ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। कितना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल। व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया, जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम 3 में बात करते हैं, है ना? 3 में बात करते हैं ना, वात पित्त कफ, हम 3 में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस, तेजस, वर्चस, हम 3 में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, 3 तरीके के पेन, हम 3 में बात करते हैं। जब तक आप 3 में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना? ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, just for as an example I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more.
have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क. एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है. दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी. एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद. आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व. क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी. व्याधि मीन्स डिविएशन. So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता. तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना. इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं. We were never intelligent. सो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया. सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व. तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट. उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की. अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स. सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन. तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें. अधि, अधि से शुरू. समाधि, you must have heard this word samadhi. The second word is shuddhi, and the third word is vyadhi. ठीक है? सम अधि, शुभ अधि. शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधि अधि, व्यधि इज व्याधि. शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है. राइट. सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा. तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि. उसको शुद्धि कहा जाता है. सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, वाटर एंड रवा बिकम्स उपमा. दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सॉल्यूशन मिलेगा. देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना. इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना. तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का. अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का. राइट. सो व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि, व्हेन यू यूज समथिंग फॉर इनहैंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं. नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं. तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की. इफ योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटीरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज. हाँ, सिंपल. आगे चलते हैं. देन हु शुड बी एबल टू यूटिलाइज थिंग्स प्रॉपरली इन द बॉडी? एवरीबॉडी ना. हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? सपोज यू हैव गॉट इनटू अ डिजीज एपिसोड. आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्मा शुद्धि. राइट.
सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए। रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए। और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट, इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इफ वी आर सेइंग वी हैव इंक्रीज द रिस्क ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी और एनी काइंड ऑफ लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? राइट, so naturally there is a balance of many things, with material, pressure, temperature, which creates life, है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना? इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क। सो हैव वी polluted the environment? क्या environment pollute कर दिया हमने? So we have created risk on us, अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? So have we changed the composition, the resources of this environment? इसमें से पानी आप देखो आसपास में, just look around, how many places where you find ponds, rivers, lake, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है। जमीन के नीचे पानी कहां है? From 50 feet to 5,000 feet down, दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास वो नहीं है। हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया। द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया। So your body is designed for utilizing natural food. भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है। All the chemical composition in the body, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे। विल यूज एडिपोज और फैट एज एन एग्जांपल। सो फैट also takes care of what you also call as cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं। डू यू नो cholesterol is an important part of your immune system. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अच्छा, 90% of the cholesterol is made by your body.
कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा। तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है। और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा। यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी। जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा। तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है। गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे। दैट इज क्रिमिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol. Yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो। नाउ गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके। So how does your body mitigate infection? Infection को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? Many of you might have got into corona, yes or no? Or some kind of viral infection you must have got into, है ना? Viral infection तो हुआ होगा सबको। What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? व्हाट इज द वे ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी टू मिटिगेट इंफेक्शन? टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना। मगर आप नहीं बढ़ने देते ना। आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल। आप बढ़ने नहीं देंगे। आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन। अब नहीं बढ़ने देते ना। दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे। कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे। So how will this body mitigate the risk? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो what will it do? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि बे जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा। हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो। So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा। सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर, एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर। सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड।
आपके किडनी के ऊपर 2 छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज। हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस। आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है। ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है। यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का, तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में। ठीक है, अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है। जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई 2 तरीके की होती है। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स। ये 2 तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है। जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है, ये 2 चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है। यानी इन्फेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी। और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया। अब इसको काम नहीं करने दे रहे तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला। ठीक है, आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो ताकि कभी काम करने दे तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी, इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट 1 or 2 थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज।
जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि, appropriate use of whatever you put in your body and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं। Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड। किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क। वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना? व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी। आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम। एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार नहीं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन। इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा है ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है, और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है। उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ? एंजाइटी हैपेंस, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है। आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होकर, बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वन वे टू नो कि आपके शरीर में
फैट यूज होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। If there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें। इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ योर इम्यूनिटी, इज एन इंडिकेटर ऑफ अ लार्जर स्कोप। आई एम सेइंग व्याधि क्षमत्व। ये अगर आप बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज व्याधि क्षमत्व, you will do Shleshma Shuddhi, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body. अब एक नया वर्ड बोल दिया, homeostasis. Homeostasis, because of homeostasis there is everything in balance in your body. तीन चीजों को होम्योस्टेसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है? केमिकल होम्योस्टेसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस एंड थर्मो होम्योस्टेसिस। तीन चीज बताया। देखिए ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल। कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। यही तीन चीजों का होम्योस्टेसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। Now, I have just told you one way to check. There are other ways to check. I have told you only one way. पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है। समझिए, आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग। इफ देयर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा हो तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं। यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू विल सी यू विल मिटिगेट रिस्क वेरी इजीली, एंड द फैट प्रोपोर्शन, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। So, as I said, thermoregulation और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट। यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं, विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। बाय जस्ट डूइंग कुंभक, यू इंक्रीज थर्मोरेगुलेशन फैक्टर और थर्मोरेगुलेटिव इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। एनीबडी हु डज कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल द व्याधि क्षमत्व हैज इंक्रीज कैन नॉट गेन वेट।
कैन नेवर गेन वेट. आई वॉज मोर देन 107 kgs. मैं 107 किलो से भी ज्यादा था. तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैनॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी. इट विल गेट यूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल हो जाएगा. तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है. सेकेंड थिंग, apart from this, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed. आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. There is nothing called as blood pressure. ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर. हाउ? बाय कुंभक. अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल. उल्टी किया होगा सबने. यू मस्ट हैव प्यूक्ड. उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा. उल्टी करने से पहले क्या होता? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी. बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ. सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट. फिर उल्टी होती है आपके. छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज्ड? छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने. इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा. अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है. लाइफ इज हैपनिंग हियर. यू मस्ट ऑब्जर्व इट, एंड देन ओनली यू विल गेट अ सोल्यूशन. अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा, तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं. दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए. प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी. तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड. अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है. कोई और तरीका नहीं है. तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं. श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन. ओजस वर्धन क्या करना? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा. खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना? आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा. वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा. तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता, कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन. नॉट अदरवाइज. कोई और तरीका नहीं है. Now, because of that, you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब. So, Shleshma Shuddhi, how we are going about doing Shleshma Shuddhi? By using Kumbhak to increase what is called as तेजस एंड वर्चस. दो फैक्टर बताए. श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर. वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया एज वन पार्ट ऑफ इट. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में.
The first thing that will teach you is Trikagni Kumbha Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhaka, which is directed towards every organ of your body. तो ये overall health program है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, heart को strong करेगा. It will build up confidence, boost up confidence, and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके blood pressure को regulate करने के factor को बढ़ाएगा. It will enhance the kidney capacity को वो increase करेगा. तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है, श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रो आउट करने का भी digestion capacity. It will increase the hunger index, the right hunger index of your body. सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग which is kept as dormant in your body. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके. ठीक है ना? तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांगा हठ कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज. सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस. ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको. नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन majorly it has been kept as it is. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट. आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिविटी. आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से. एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे. वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर. एंटी एजिंग भी होता है इससे. ठीक है, 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक. ये तीनों चीजें, त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हठ कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है. कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है नॉट विथ कुंभक. करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना? तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट. लाइक वेट रिडक्शन तो होगा. इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadik Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल टेक 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके. ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच यू कैन डू दिस? नो, यू कांट डू दिस थ्रू एनी अदर वे. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधिक क्षमत्व.
तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसी चीजें नहीं होती। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधि क्षमत्व बढ़ाएंगे तो एक हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है। So this is a missing part that we must focus upon, and this program is a complete rehabilitation, recovery, rejuvenation program, है ना? तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन। किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the vyadhi kshamatva, the mental issues actually collapse down, वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। So the core thing is vyadhi kshamatva बढ़ा के what we are doing Shleshma Shuddhi कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमेदा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए। लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज अमेदा। किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त, तो है ना, सबके लिए जरूरी है। बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए। Take a decision. If you take a decision towards your life, you'll see you can go towards health and happiness. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा। बाकी the team will take you forward. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. So now I will be sharing the program details. So just give me 2 minutes. Just so Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. Ashwini, is the screen visible? Yes, ma'am, Ashwini? it's visible. It's visible, ma'am. Okay. And ma'am, So it's a guided program. It's a guided program conducted online on Zoom app by trained कुंभक mentors. तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं when we say trained कुंभक mentors? ये नॉर्मल योगा नहीं है, तो इसके लिए हमें जो mentors है वो तैयार करते हैं हम लोग, who are trained by Swami ji himself to take classes. So program overview, it's a 6-week program, 18 live classes, 3 classes every week, प्राण शक्ति diagnosis for root cause determination. जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना, as you just heard in the video, everything has a root cause. The fat in your body
There is some reason why you're at risk. So we get to the root cause as to why the weight is there in your body. So Pran Shakti diagnosis for root cause determination, one customization class. Now, what is this customization class? Once your root cause is determined, Swamiji gives you a customized kumbhak. I'm sure many people have heard what is kumbhak, but what you do in yoga is just a general kumbhak. Here you're using kumbhak therapeutically, and it's customized according to your set of problems. The reasons why you have weight in your body. For example, 10 people might have excess weight, but 10 people might have different reasons for having weight in the body. So class start date for Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa, 7 p.m., 27th April, Thursday. So class time and days, time 7 p.m., class days, Thursday, Saturday. So next week onwards, it's going to be Monday, Wednesday, Friday. Okay, so thrice a week, class is starting on 27th April, and the same week, 29th April. Again, the next week, it's going to be Monday, Wednesday, Friday. So you get 3 classes a week. So what is the class experience like? Live session, mentors watch participants, written instructions, session recording. Now let's come to the part, what are the extras we are providing? Mental practices, unique diet perspective, simple detox, knowledge like no other. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. Finding it strange कि ऐसा कैसे कि ये program कुछ लोगों के लिए नहीं है? Of course, this program is not for some people. Who is this program not for? It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. ये तो आप सिर्फ डाइट करेंगे तो ही हो सकता है, हर्बल लाइफ होता है और बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं, कीटो डाइट वगैरह, जिससे हो सकता है. बट हमारे पास ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है जो आपको कल ही रिजल्ट देगा. Because we are looking for something permanent, something within you which changes and your body is de-risked and then your weight comes down. So who is this program not for again? Not for those who are not ready to work on their body, who are going to be lazy and are willing to just do some shortcut methods. It's not for those who cannot invest 60 to 90 minutes every day on themselves. Not for those who are impatient. आपको patiently क्रियाएं करनी पड़ेगी. It's not for those who are looking for a free treatment. Special webinar pricing. I'm sure everybody waits for this special webinar pricing. So 9,500 was the actual program fee for Ameda program. But because you made the effort of coming to the webinar, we have made it 5,500. So how to enroll? Pay program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, submit your details to access coach dashboard, join class WhatsApp group. So what exactly do you get in the Ameda online program? Let's look at that. Pran Shakti diagnosis for root cause determination. 3 classes per week, 60 to 70 minutes duration. Class recording, access for 6 months. Separate videos of all the kriyas. Written instructions, daily support in the class group. Customization of kriyas as per the PSD. 30 days of extra support after the program is over. So this is a unique online program where you get 1 month's extra support even after the program is over. And your recordings have access till 6 long months.
So payment methods, webinar discounted fee is of course valid till 26th April. And we have the address, the UPI pin, where you can make the payment. So our support team, Rachna Shrimal Bothra, that's me, Shalini Bhagwat, Ranjana Swain, Neha Upadhyay, Anil Chauhan, and Himanshu Reddy. So we have a team of people who are supporting us. Neha Upadhyay, our enrollment expert, Shalini Bhagwat, our class administrator, Ranjana Swain, our mentor, Himanshu Reddy, our back support, and the program director, that is me, Rachna Shimal Bothra. So thank you so much for listening to me patiently. Now I would like to invite Pinaki Sir, Pinaki Banerjee, Sir, to share his experience of Ameda. Pinaki Sir, are you there? Namaste, namaste. Namaste. Yes, I have attended Ameda in the January month. Ashwini, can we have Pinakin Sir in spotlight, please? Yeah, just hold on. Just 2 minutes, sir. We'll put you on spotlight. Himanshu, can we have sir on spotlight, please? Yeah, he is now on spotlight, ma'am. Okay. Yeah, Pinaki. So, Yes, I have Pinakin joined sir, the course in January. The course is Okay. excellent. At first, I feel a bit exhausting because I don't have that much energy. I actually had BP and thyroid issues. So I usually have lack of energy. So first 2 weeks got tiring, but after that, my energy got increased. The most astonishing thing I found is that my weight loss happened in 4 months. In 2 months, it lost 4 kgs. Right. And the another main thing issue that I found is that I have lots of stomach issues. The stomach issues got resolved absolutely. 5 years old stomach issues got resolved in just 2 months. And my metabolism increased and all the energy got increased. Yes, it did not happen in 15 days. It did not happen in 1 month. It happened in 2.5 months. That I am telling. Right. So now I am practicing regularly. Yes, of course, it takes minimum 60 to 70 minutes minimum it takes. You have to invest regularly. It is best to do in the morning. I invest in the time some morning. And Rachna ma'am and Ranjana ma'am, Swamiji, I have a respect for all of them. And the most astonishing thing of Visa and Kumbhak here, what I have seen is that customized program. The customized program here, it is not available anywhere else. This is the most astonishing and most wonderful thing. This will be of great help to everyone. The customized program. This is totally a customized. It is for me. It's different from other people. This is different. Totally a different thing. And all the kriyas, those are not actually available in the YouTube. Those are very, very unique type. I love those. They are nowadays also that. Sir, you're unmute. Please unmute yourself. Sir, you've got muted. Okay, now the thing is that due to work pressure, I don't get enough time for morning walk and all those. Okay, but after doing Amida, morning walk and walking does not even require. We'll get ample amount of energy after doing 4 to 5 kriyas. That's a sure shot. Because I am the person who. Sir, again you're on mute, sir. Yes, Sir, that's you're not all. audible, sir. Okay. Yes, can you hear me? Yes, now I can hear you. Yes, that's all I've said because till now I have got
obviously the thing is that yes, all issues have not been solved till now. I have 3 months, for 4 months, but many issues have been solved. 50 to 60% issues have been solved in 4 months. That I can say. Thank you. Thank you so much, Pinaki sir, for joining us. And now I'm sure the participants have got more deep insight of Ameda when a participant has shared his journey with you, that you will have to invest 60 to 70 minutes every day. And that is the only way. There is no shortcut to come out of your weight. Thank you so much, Pinaki sir, to take out time and Thank join you. us Thank for you. the webinar. Thanks. So now I will be taking up the questions. So I'll just take up the questions one by one. Srinivasan sir, so actually what we must do in Kumbh? So I think you must have got some clarity that Kumbh, when we talk about Kumbh, we are working on our epigenetic triggers, the organs. We are working on strengthening the organs. As Pinaki sir said, his metabolism improved. उनके स्टमक इश्यूज सॉल्व हुए. सो कुंभक आपके जो अंदरूनी ताकत है जो कमजोर हो गया है उस पे काम करता है. Nothing that you can see from outside. Oh, in a day or two my weight has reduced to 5 kgs. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. It is going to be a slow process but a sure short process and a long lasting process. Nothing, in fact, अगर आप डाइट करते हो so you lose all your glow and you start looking very aged because आपकी body weak हो रही. But with Kumbhak, the result is totally opposite. You start glowing, you become more strong within your body, and your weight starts decreasing slowly, slowly. It is not going to be an overnight process. Okay. Can we have the hands raised for whoever wants to ask their questions? Yes, Ritu ma'am. Ritu Marva ma'am, please unmute yourself. And can you hear me? Yes, Am I audible? certainly. Yes. Yes. Ma'am, I have done 1 or 2 courses, Kumbh courses with you. Now I want to find out whether there is difference in the courses. With Ashtang and Ameda? Yes. Yes, Ashtang and Ameda are different programs. Ashtang, our focus is totally on neuromuscular health. When we talk about Ameda, it is looked into with 3 different perspectives. One is the rehabilitation, as Swamiji already mentioned. So it's the rehabilitation, then the rejuvenation of the organs, and we are basically focusing on the weight. So the Now, kriyas are going to be totally different for Ameda. They'll be different from the ones I have done earlier. Yes, yes. Acha. And how do I continue then? Like I am doing something that you've taught me earlier and I do this also, then will it not be contrasting to So, each ma'am, other? there are 2 ways to look at it. No, then you have to do the morning practices with Ameda. And for the time being, you can leave Ashtanga. For the time being. Okay. Thank you. Thank you so much. Yes, Shibaji, sir, you can ask your question. Please unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. To the program. I have just one query. Whatever the job that I'm in actually requires a lot of travel. Sir, I'm not able to hear you properly, sir. Can you hear me now? Yes, I can hear you now, sir. Okay, so good evening. Good evening. My query is I am in a job that requires a lot of travel, so there might be days that I'll not be able to attend the live classes. So does it matter if I have to skip 1 or 2 classes in between?
No, it absolutely doesn't matter. What I would suggest is you go to the recordings and then our mentors are going to help you in the next class. Okay, so the classes will be on 3 days, and we are required to practice it on all Every day, days, right? every day. Yes, Oh, sure. okay, thank you. Okay. Thank you, sir. So Varsha Biani ma'am, you can ask your question. Good evening. Varsha Biani. Yes, Good evening, evening. Ashna ma'am. Am I audible? Good evening. Yes, surely. Ma'am, I wanted to ask, is this process even helpful for skin problems, pigmentations Ma'am, and all? see, yes, what we have seen with the current participants, the batch that is ongoing, and the past participants, the skin problem is also a part of the rejuvenation process. So we have seen the allergy issues and the various kind of other skin problems like fungal infection, like allergies. These are also like helped in Ameda. Okay. Okay. And ma'am, one more thing, that if we are traveling during the days the classes are being scheduled, then is there any possibility that we join the next batch or something like that? See, if you're going to travel for maybe 60-70% of the classes, then it is better that you join the later batch. But since we have limited seats, so it's always better that you book your seat so you can attend for the next batch. Yeah, that is what I'm asking. Like, if I'm not able to attend this workshop, if I register it maybe today or tomorrow, can this be deferred to the next batch? Yes, upcoming? definitely. Okay, ma'am. Thank you so much. Yes, thank you so much. Yes, Smita ma'am, you can ask your question, please. Smita ma'am, can we have the videos on for people who are have raised their hands so that I know exactly I think who my I'm video is speaking? on. Smita ma'am, no, I can't see you. I can just see the black screen. Okay, now you can see me? No, ma'am, not as yet. Yes, No? now I can see. Yes. Okay, I just wanted to sing. I've done your Ashtang Chikitsa recently. Okay. Now, Yes. actually, there are still many of the exercises and that I'm still not able to do. That is the later one, the vinyasas. Now, Okay. does this program also involve a lot of exercises like that? See, there will be movements, but it is very different from Ashtang, right? Because it's working basically, our focus is the weight. So, of course, it's not as extensive as Ashtang, but the Kriyas are a little different. I mean, would there be something like Surya Namaskar and Hatha Yoga and all? Because I don't think I'll be able to do all that. No, Surya Namaskar. I mean, I've had fixation surgery of the C1, C2. Hello? Okay. Yes. Smita ma'am, I can hear you. I've had fixation surgery of C1, C2. So there are many things that I'm not able to do. That is why I wanted to know what sort of exercises would be there so that whether I can join or not. So ma'am, if you have done Ashtang is far, I would say, rigorous than Ameda. Because if you've got a fixation of the neck, there are a lot of neck exercises in Ashtang. So I'm sure then you've not been able to do it. So in any of our courses, we do not force the participants to do anything, because that gradually happens as the body is adjusting and it becomes better and better. So in any kind of our programs, nobody is forced. And there is no specific kriya in relation to your neck in Ameda. Okay. Okay. Yes, Gauri ma'am, you can ask your question, please. Hi, good evening. Hi, good evening. Ma'am, you need to unmute yourself, please. Yeah. I'm not able to. Yeah, okay. I'm audible now? Yes, very much. So will this help in hormonal imbalance and PCOD specifically?
Definitely, Will ma'am. one be able to As lose weight because of PCOD, yes, which anyway becomes so yes, much more difficult, when somebody is suffering from PCOD, the weight loss as it is 100%. becomes 10 times more difficult. So, See, when we are talking about Ameda, if you have listened to Swamiji's video very keenly, yeah, see, he yeah, talks about the internal system, why your body is putting on weight. So right, PCOD is one of the reasons. So your body is at risk, and the fat is there to, what should I say, mitigate that risk. So right, now when we work at the risk factor, the root cause, obviously when the root cause is mitigated, the risk is mitigated, and the VAT, and ultimately you do away with your weight. right. Okay, So in right. a nutshell, Thank you. that's all I can say. That Right. anything that is creating a risk for you, whether it's Hmm. PCOD, whether it's thyroid, whether it's whatever be it, जो भी आपके लिए रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए बॉडी आपका वेट बढ़ा रहा है, उसको अगर हम हटा देते हैं थ्रू द कस्टमाइज्ड वे, थ्रू द प्राण शक्ति डायग्नोसिस, slowly you're working on your internal system and you do away with your weight. Right. Okay, thank you so Okay. much. Thank Gayatri you. ma'am, can we Thank you. have the video on please so that you can ask your question? I don't enjoy speaking to the blackboard. Can Yes, I ask a Gayatri ma'am. question? Yes. Gayatri ma'am, you can ask your question, please. Someone muted me. That's why I just. Okay. Can I go with the question? Yes, definitely. Good evening, ma'am. My evening. office timings goes with 7:30 or 8 in the evening. So I will not be Okay. available. I cannot go with the 7 p.m. program. Is there any program in the morning like 6 or 7? So see, we will be having alternate week. We will be starting the morning 7:15 batch. So you can attend that. So what you can do is, because we have limited seats, you can enroll and mention there that when you start your next morning batch, I will attend that. Okay, so I can go with enrollment and I will be knowing Yes, that the yes. timings. And Neha, you can tell Neha, she will make sure that you are put in the next batch. She'll just mention that beside your name. Your voice is breaking for me. I'm saying the enrollment expert Neha, she will be connecting with you. And when you make the payment, just mention that I want the morning batch. So accordingly, she can add it beside your name. And when the morning batch starts, she'll inform you and put you to the group. Okay, yeah. Thank you so much. Thank you. Alka ma'am, you can ask your question, please. Yeah, about this morning batch. So when will that start? See, it was planned for next week. So Okay. this week we will be starting the evening batch for convenience of all, because we've got a lot of participants who want the evening batch. Okay. And another thing, like how, I mean, if the evening you put up the recording that day only, that evening only, or excuse me. So recording is put up normally the day when your program is in the evening 7 o'clock. So by 9:30, 10. Of course, not okay. the first week, because the backend guy has to make all logins for the participants. So from next day onwards, you will get it. That means for first week, since you're going to start on a Thursday and a Saturday, so Thursday to nahi ho paega. By Friday, it's going to be up. And then again, Saturday, you'll get it on time, maybe 9:30, 10. Okay. Yes, Pooja Chalani, ma'am, you can ask your question, please. Yeah. So my question is, so does what is the thing? I mean, do they do the diagnosis first and then they start the whole process, or how does that work? I Okay, had I'll tell you how it works. First, you start your Ameda sessions. Then we tell you to fill up a form, which will have Okay. the breath ratios, your
Inhalation, how much is your inhalation? How much is your inhalation? Hold. Exhalation, kitna hai? Exhalation, hold, kitna hai? There are certain movements you would be told. So we have a couple of 8 to 10 questions. Okay. Along with your problems, which is related to your weight, whatever Okay. problems you're facing. So once that form is filled up, at the end of 9 weeks, you get your customization. Sorry, not 9 weeks, the 40 days program. So at the end of it, you get your customized kumbhak, which is done by Swamiji himself, according to your PSD form, whatever you have written. So this whatever is going to be customized, we would be learning the same process even while we are doing it. See, the customized kumbhak means your breath ratio will change. जो आपको क्रियाएं करवाई जाएंगी वो सेम रहेगा. Only your breath ratio will change. For example, when you're doing your customized kumbhak, the breath ratio that you are following and the breath ratio that I am following is going to be totally different. If you're doing a customized kumbhak, say Devdutt kumbhak, I would be doing something as Shiva kumbhak according to my problems. So customized kumbhak would be different and the breath ratio will be different. I hope I've been able to explain you. Sort of. I'm still processing this a little to try and understand. Should I But that's explain why I once was again? wondering that why is it not done on day one and why is it done so much later? Is something that's like a question in my head, because by that time I am a little more well versed by what am I doing, right? Okay, I'll explain the reason to you. See, when you start the program, you need to practice those kriyas. So that practicing itself takes 40-45 days. Every day practice. Okay. Then when we give you the customized kumbhak, that is at the end of your tenure of learning, then once you're well versed with the kriyas, you will just have to change the breath ratio and your customized kumbhak will be given. So that is the reason, because this is your practicing time. You need to learn and practice those kriyas. Okay. So this would be a mix of kriyas and certain asanas and everything? Yes. And this is going to be done at Would be 7 p.m. so in the evening. Okay. And if this is Yes. done at 7 p.m. in the evening, then how does the meal go prior to it? Like someone who eats in See, for the meal part of it, this we have started on the request of many people. We just had a morning batch. Everybody, like we've got like lots of people already on our roles who have told us that they want it in the evening. So 7 o'clock is the time which has been decided because most participants are back from work. Now, as far as the food is concerned, see, after the class is over for thrice a week, you'll have to do some adjustments. Either you eat before the class, maybe 6:30, which is anyway the best time to eat for a great so you can metabolism. do, okay, no, but I mean, I eat in early. That's why my question was there, that if you eat in early and then you are doing a session back to back, isn't that a problem? Because I No, your thought that question a is lot of valid breath enough. work is not. Yes. So you can eat by 6 o'clock, maybe 1 hour after that, you can do the kriyas, no problem at all. I'm sorry, you're breaking up and I wasn't able to catch you. Okay. So you can eat by 6 o'clock maybe, and then after an hour, you can start doing the kriyas. Okay. And what is your morning batch timing, if I can know that? Because this is not making logical sense in my head to do something and. Okay. So our morning batch time is 7 o'clock again, 7 in the morning. Okay, in the morning. Okay. And when is the next one starting? It's mostly going to start next to next week. Next to next I mean, week. in Okay, the sense, next week. This week we are starting evening. Next week we'll start morning. At the morning. Okay, yeah, fine. So I can get in touch with you or Neha, one of you, and figure out. Yes. Yes. No worries at all.
You can Right. write in the And if I WhatsApp have group also. done, and if I have some more questions that pop in after this, No worries, how ma'am. can I have those answered? You can write down the questions in the webinar group, and one of the admin people will definitely answer to your questions. So please, fine. my request is whatever clarity you require, you should get clarified before joining any program. Of course, of course. And Yeah, be that's the convinced reason and why. be satisfied. Yes. So any n number of questions that you have, please feel free to write in the webinar group. Yeah, I'll do that. Yeah. Thank you so Okay. much. Thank you. Thank you. Yes, next question. I can't see any of the, I can see 2 hands raised. But I can't see any of the raised hands. So anybody with any question? Can you hear me? Yes, sir, I can definitely hear you. That myself is Manoj Thakur. I have just a query. Yes, sir. After this course being done by us, do we need to stop, or the medicines we are taking will stop or will be minimized, or what exactly impact will be done on the medicines issues we are having? So what medicines are you taking? Like for BP or for diabetes? Sir, actually, one thing is there. The main focus of this program is not BP and diabetes, but ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पिछले participants हैं, वो लोग along with the weight loss, they have seen that the BP and the diabetes medicine is also now, you have, once you join the course, we do not suggest anybody to stop medicines, but gradually, as you see the change within your body, you yourself will be able to decide whether to leave the medicine or not. Okay. Or do we have to make some special arrangement? Can I do in my sitting while in my office or somewhere place, or do we have to have some dedicated place where we can have something like that? Sir, the thing is you will require a mat and a little space for doing the kriyas. That's it. So, and it's always better to be, because when you are at work, then your mind is in, 10 other things also. So if you can do it dedicatedly when you're back home, that is always better without any disturbance. So I suppose that for me the morning session will be the better one, because at that time I am at my home, so I can give time, but not in No the worries, evening. sir. You can always enroll now, because next week we will be starting the morning batch, and then Neha will do the needful. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you. Any other questions? Yeah, I have a question. Yes, ma'am. Can we just get a glimpse of a couple of this one Kumbha Kriyas that you do, so that we get a little idea about what it is? Kumbha Kriyas, you want a little idea. Okay, you can write in the webinar group. If we have any kind of these things, we will definitely come back to you. Okay. Any of, if we are arranging for any live class, we'll definitely get back to you, ma'am. As of now, we do not have any provision for that. Okay. Okay, so let me. Any other question? Yes, ma'am. So I'll wait for something from your end, and then I'll take a call. Yeah, you can write down in the webinar group, and we'll keep that in mind. As and when we have any class, we'll definitely let you. Sure. Okay, thank you. Thank you. Any other question? Okay, so we have come to the end of the Ameda webinar.
So I hope we've got a little insight on how the body works and why there is fat in the body. तो अब आपको decide करना है what exactly do you want to do, to work on your internal system or just externally diet and take temporary relief from your fat. With that, I come to the end of the webinar. Signing off, Rachna Bothra. Namaste. Good